बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से सेकंड पोएम के एमसीक्यूज को, जिसका नाम है डोंट क्विट, और ये लिखी है एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने। बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप न्यू बुक की फर्स्ट पोएम के एमसीक्यूज भी देखना चाहते हैं और उसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर मौजूद है, अभी शो हो रहा होगा। आप उसे क्लिक करके आई बटन को वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखें, जिंदगी में बहुत सारी दफा आपको ऐसा लगता है कि जो आपने टारगेट सेट किया है वो इम्पॉसिबल है। ऐसा लगने लगता है जब इंसान बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है, बहुत स्ट्रगल कर लेता है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। यही मैसेज है इस पोएम का कि आपने हार नहीं माननी, क्योंकि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपने काम करते रहना है एंड अल्टीमेटली यू विल सक्सीड। वीडियो में आगे बढ़ते हुए उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी इस छोटी सी दरख्वास्त को, जो कि आपकी स्क्रीन के टॉप पर दिख रही है, उसे जरूर पूरा कर दें। शुरू करते हैं एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज को करने का तरीका ये होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इन एमसीक्यूज को देखें, वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करके अपने आंसर्स पहले लिख लें और फिर उसके बाद इसे रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इसे फ्लो में सुनते रहेंगे तो काम तब भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा फायदेमंद बात यह होगी कि आप इसे पॉज करके अपनी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको चीजें याद रह सकें ज्यादा बेहतर तौर पे। तो शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। द पोएम डोंट क्विट वाज कंपोज्ड बाय सर हेनरी विलियम्स, सर हेनरी वॉटन, हेनरी लॉन्गफेलो, एडगर एल्बर्ट गेस्ट. Edgar Albert Guest is a poet from England, America, Canada, Australia. Edgar Albert Guest is known as the poet of nature, people's poet, great poet, elite's poet. आपने करना यह है कि आप इसको पॉज करें वीडियो को और आंसर्स को लिख लें और रिज्यूम करके फिर चेक कर लें। Here are the right answers. The poem Don't Quit was composed by Edgar Albert Guest. Edgar Albert Guest is a poet from America. Edgar Albert Guest is known as the people's poet. Edgar Albert Guest may be termed as a or an poet of nature, inspirational poet, classic poet, romantic poet. Who is the poet laureate of Michigan? Sir Henry Williams, Sir Henry Wotton, Henry Longfellow, Edgar Albert Guest. The pen name of Edgar Albert Guest is Sir Edgar, Sir Henry Guest, Eddie Guest, Sir Eddie Guest. तो आपने पॉज कर लेना है, अपनी स्क्रीन को, अपने आंसर्स को लिख लेना है, उसके बाद रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लेना है। एंड हियर आर द राइट आंसर्स. Edgar Albert Guest may be termed as an inspirational poet. Who is the poet laureate of Michigan? Edgar Albert Guest. The pen name of Edgar Albert Guest is Eddie Guest. This work of Edgar Albert Guest became the bestseller, A Heap O Livin, Just Folks, Rhythms of Childhood, Life's Highway. The poem Don't Quit is a or an sad poem, funny poem, ancient poem, motivational poem. From which point of view is this poem written? First person, second person, third person, none. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. This work of Edgar Albert Guest became the bestseller, A Heap O Livin. The poem Don't Quit is a motivational poem. From which point of view is this poem written? Second person. What is the tone of this poem? Choose all that apply. Sad, upset, encouraging, angry. When things go wrong, as they sometimes will. When the road you are trudging seems all filled, uphill, killed, linked. What does the word trudge mean? Walk slowly, brisk walk, slowly, tramp. पॉज करके वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. एंड हियर आर द राइट आंसर्स. What is the tone of this poem? Encouraging. When things go wrong, as they sometimes will. When the road you are trudging seems all uphill. What does word trudge means? Tramp.
In the first stanza of the poem, the word sigh symbolizes happiness, courage, regret, pain. The phrase twist and turns is an example of personification, onomatopoeia, metaphor, alliteration. Life is square with twists and turns. Which one of the following phrases is a substitute of twist and turns, ins and outs, pros and cons, ups and downs, do's and don'ts? पॉज करके वीडियो को अपने आंसर्स को लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. In the first stanza of the poem, the word sigh symbolizes pain. The phrase twist and turns is an example of alliteration. Life is square with twists and turns. Which of the following phrases is the substitute of twists and turns, ins and outs? Don't give up though the pace seems slow, low, great, weird. You might succeed with another blow. Means you give a blow, receive the blow, withdraw the struggle, continue struggle. It seems to a faint and faltering man. Faltering means untrained, untiring, unprepared, uncertain. पॉज कर लें वीडियो को और वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपने आंसर्स लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. Don't give up though the pace seems slow. You might succeed with another blow means you continue struggle. It seems to a faint and faltering man. Faltering means uncertain. It seems to a faint and faltering man. Faint and faltering is an example of personification, onomatopoeia, metaphor, alliteration. The struggler learns too late that he was unable to struggle, should have taken rest, was close to his victory, should have quit. The phrase golden crown means wealthy, power, wealth and power, victory and throne. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. It seems to a faint and faltering man. Faint and faltering is an example of alliteration. The struggler learns too late that he was close to his victory. The phrase golden crown means victory. Failure is the pillar of faith, saving success, death. The figure of speech in the silver tint of the cloud of doubt is personification, onomatopoeia, metaphor, simile. When things seem worst, we should run away, take some other way, stick to them, stop moving ahead. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. Failure is the pillar of success. The figure of speech, the silver tint of the cloud of doubt is personification. When things seem worst, we should stick to them. So stick to the fight when you are hardest hit, unhappy, unlucky, betrayed. In the poem Don't Quit, what does the speaker of the poem say? Success is failure turned inside out, an uphill battle, when funds are low and debts are high, when things seem worst. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें, फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. So stick to the fight when you are hardest hit is the right answer. In the poem Don't Quit, what does the speaker of the poem say success is? Failure turned inside out. The moral of the poem is that we should face challenges of life, enjoy success, run away from the hardships of life, only think positively. In the poem Don't Quit, the theme is patience, perseverance, pretense, perfection. लेकिन इससे पहले कि आप अपने आंसर्स लिखें, एक छोटी सी गुजारिश है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको अपेयर हो रही होगी इन रेड कलर. ये काम लाजमी तौर पे कीजिएगा क्योंकि इट encourages us कि हम और वीडियो बना सकें. So here are the right answers. The moral of the poem is that we should only think positively. In the poem Don't Quit, the theme is perseverance. और इस जैसी और अगर आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी जो है वीडियोस हैं,
जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से हैं। अब अगली वीडियो में हम थर्ड पोएम के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपके पास हर वीडियो जो है वो आपको मौसूल हो सके ऑन टाइम। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।